Today we're going to start with a new reading by JV Meenakshi Mam, Trends and Patterns in the Triple Burden of Malnutrition. She was our professor in D school, and it is our good fortune that we are reading this reading. It's a little difficult reading as far as I understand this. So we'll be writing points alongside, and you have to be patient while reading this reading. So you have to read it very carefully because I won't be writing about the different data sets which ma'am has used. So you will have to use and read the reading. But I'll give you the gist of it. So what exactly the reading is talking about. So first of all, she starts by telling that if you look at India, there is an income growth which is happening. But within income growth, we should expect that the prevalence of malnutrition should be decreasing. Prevalence of undernutrition should be decreasing. But that's not what we have seen. We have not seen that the prevalence of undernutrition decreasing. And here she makes it a point to talk about three different kinds of problems. That is, she's talking about it is not enough to just talk about malnutrition. So it can manifest in three different ways. It can manifest in terms of undernutrition. It can manifest in terms of overnutrition. And it can also manifest in terms of micronutrient deficiency. So we will write few points and understand it alongside. Please write. So, although income growth is seen in India, but the prevalence of undernourishment has not reduced. This is the first point she's making. So she's saying that if you look at the income growth, yes, income growth has occurred. But ideally, what we should be expecting is that with an income growth, undernourishment should have also decreased. But that's not what has happened. Right? That's not what has happened. And she's saying that she's also talking about the anthropometric measures of undernutrition. For example, stunting. That prevalence has not decreased. And she'll tell about in the paper that why stunting is a problem. Because will this be carried on in the adult life, and this is going to affect the work and the working capacity, and hence the income capacity. So this is what she's talking about. Then she asks a question that what is food security and nutrient security is all about. So is it only about having enough food? She says no, just having enough food is not important. What is important is that you should have varied sources of food supply. You should have varied sources of food supply which can ensure diet quality. You can't have just carbohydrates. You can't just have fats. You should have different kinds of food which are giving you different nutrients. Food and nutrient security is not only about having
enough food. But having access to varied sources of food that can help in ensuring diet quality. That can help in ensuring diet quality, right? So they're saying that you do not want to have food just which is enough in calories. You should also have food which is enough in micronutrients. Uh, so what she's saying is that this triple burden of malnutrition, that is basically coming from the coexistence of undernutrition, overnutrition, and the micronutrient deficiencies. So when you talk about the word malnutrition, right, it is about having not proper nutrition. So we are very accustomed of thinking, oh, he is malnourished. So we are just thinking in terms of he is undernourished. But overnourished is also malnutrition. So malnutrition involves when the proper nutrients are not being given. So there should not be no excess supply should also be given, and not enough supply should also be. I mean, you get the point. So you should have proper balance of the nutrients should be given to you. So triple. All of these readings, I'm telling you, ये तुमको बहुत पेशेंस के साथ पढ़ने वाले. तुम कोई भी सब्जेक्ट को अगर सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि मेरे नंबर आ जाएं, नंबर आना अपने आप में रिजल्ट है तुम्हारी पढ़ाइयों का. ठीक है, तुम सिर्फ उस पर ध्यान नहीं दे सकते. तुमने अगर ठीक से नोट्स बनाए हैं, तुमने जो भी कहा गया है वो पढ़े हो, तुम्हारे नंबर आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता उस बात. लेकिन तुम ये चाहो कि तुम्हारे को जितनी भी 20 रीडिंग है कोर्स में, तुम उसको बस एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ो या 4 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, इट डजंट वर्क. तुम्हारे को पूरी रिकॉर्डिंग्स दी गई हैं, तुम्हारे को मेहनत करनी है, नोट्स बनाओ अपने. मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे को बीच में से चीजें और लिखनी होंगी इसमें, वो करो. ठीक है, पढ़ाइयों को बोझ ना समझो. जितना हम पढ़ाइयों को बोझ समझते हैं ना, उतना हमारा कम मान करता है काम. कोई भी काम को तुम देख लो, तुम किसी भी काम को अगर बोझ समझते हो, करने का मन नहीं करता. उसको करने का मन करता है, बताओ? नहीं करेगा. So triple burden of malnutrition is the coexistence of undernutrition, overnutrition, and micronutrient deficiencies. Micronutrient deficiencies, right? तो हम ओवर न्यूट्रिशन को भी नकार नहीं सकते. We cannot ignore overnutrition, because with obese workforce, our capacity to work actively is going to fall. And when our capacity to work is going to fall, our income capacity is going to fall. So हम overnutrition को भी नहीं हटा सकते. तो
अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन का अपनी तरफ से ये मतलब है कि तुम्हारे को सही मात्रा में जितने न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वह नहीं मिल रहे, राइट। सही मात्रा का मतलब ये नहीं कि ओवर मात्रा, वो भी नहीं होनी चाहिए, दिस शुड आल्सो नॉट हैपन, राइट। सो और ओवर न्यूट्रिशन के साथ जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम, दैट इज अगेन अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डेटा सेट्स के बारे में बात करी। हम जैसे जैसे उसके बारे में बात करेंगे, हम वी विल टॉक एक्चुअली अबाउट देम। I'll be telling you about this. मेनली मैम ट्रेंड्स के बारे में बात कर रही हैं, राइट। सो वो ट्रेंड्स के बारे में बात कर रही हैं, वो पैटर्न्स के बारे में बात कर रही हैं, राइट। एंड इट इज नॉट telling you, it is not giving you the evidence of the causal factors which are affecting malnutrition. So this paper is mainly about the trends and patterns in the triple burden of malnutrition. So हम सबसे पहले trends in undernutrition को देखते हैं, right? Trends. Trends in undernutrition को देखिए, right? So undernutrition is characterized by the lack of nutrients and the insufficient energy supply. So malnutrition has both undernutrition and overnutrition. So what is undernutrition? Uh, it is characterized by a lack of nutrients and insufficient energy supply. Insufficient energy supply, right? Insufficient energy supply. Right. So one of the indicator of undernutrition is that the child is stunted, right? Stunted. So what do you mean by stunting? What do you mean by stunting? And this is also one of the measures through which you can assess the malnutrition, right? So it indicates stunting is the indicator of undernutrition. Of undernutrition, right? Stunting is the indicator of undernutrition. It indicates that so बच्चा जो है वो अपनी पूरी हाइट नहीं लेता है, उसकी जो पूरी ग्रोथ होनी चाहिए थी एक पर्टिकुलर एज पे वो नहीं हो पाती है। उससे हमारे को लगता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड है, राइट। इट इंडिकेट्स that a child has failed to reach their growth potential
as a result of disease, poor health, and malnutrition. तो अगर कोई बच्चा अपनी एज के हिसाब से जो उसकी हाइट होनी चाहिए थी उससे काफी कम है तो हम कहेंगे उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो गई, दैट्स अ स्टंटेड चाइल्ड, राइट? सो इसका मतलब है कि जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो उसकी एज के हिसाब से नहीं हो रही है. प्लीज राइट, अ चाइल्ड is defined as stunted if they are too short for their age. And it indicates that their growth and development have been hindered. हाँ बेटा, राइट. एक तो जो जिस तरह से अंडर न्यूट्रिशन दिखाई देता है, एक तो स्टंटेड है, राइट. दूसरा है अंडरवेट. एक तरीके से जो अंडर न्यूट्रिशन जिस तरह से कैरेक्टराइज होता है, जिस तरह से दिखाई देता है, वह स्टंटिंग के रूप में दिखाई देता है. दूसरा दिखाई देता है अंडरवेट के रूप में, राइट. इसका मतलब है कि बच्चों का जो वेट है जो उनकी एज के हिसाब से होना चाहिए वह भी नहीं है, राइट. सो another indicator of undernutrition is underweight, not the under, is underweight. एज के हिसाब से जो उनका वेट होना चाहिए था वह नहीं है, राइट. हालांकि हम बार बार बात यह कर रहे हैं कि बच्चों की एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं है, बच्चों की एज के हिसाब से उनका वेट नहीं है, लेकिन यह सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है. इसका अपने आप में पूर्णतया असर जब यह बच्चे एडल्ट होते हैं उन पे भी दिखाई देता है. क्योंकि अगर वो बच्चा जो कि अंडरवेट रहा है, जो कि स्टंटेड रहा है, वो भी स्टंटेड एडल्ट में ही रूप लेगा और उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम रहेगी, उसकी कमाई करने के साधन कम रहेंगे, इनकम कैपेसिटी कम रहेगी इन जनरल, राइट. हम्म. both stunting and underweight have long-term economic,
and health consequences into adulthood. प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं आती है, सिर्फ चिल्ड्रन नहीं रह जाते हैं स्टंटेड, वह स्टंटेड यंग में भी बदलते हैं, स्टंटेड एडल्ट में बदलते हैं। और ना ही सिर्फ ये है, जो स्टंटेड माएँ हैं वो जो मालनरिश्ड रही हैं, वो अंडर नरिश्ड रही हैं, वह एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने की भी उनकी क्षमता कम हो जाती है, राइट? दे टेंड टू गिव बर्थ टू बेबीज विद लो बर्थ वेट्स, राइट? तो ये जो फोर्थ पॉइंट है बता रहा है कि सिर्फ चिल्ड्रन तक नहीं सीमित रह गया, एक तो इसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हैं कि वो एडल्टहुड तक जाता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम है। और दूसरी बात यह भी है, एंड ऑल्सो और इंटरजेनरेशनल transmission of malnutrition. Intergenerational transmission of malnutrition. जो undernourished girls हैं, they often grow up into undernourished mothers, right? Who in turn tend to give babies with a very low birth weights, right? Okay. उसके बाद मैम ने कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात करी है, उन ट्रेंड्स को देखते हैं बेटा। उन्होंने कुछ डेटा के बारे में बात करी पहले तो। What is the data which she has used? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटा जो उन्होंने यूज करा है वह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992-93, and 2005-06। पहला तो ये एक डेटा उन्होंने यूज करा है। And there is another survey which she has used. Let's tell you that. There is another survey which is district level household and facility survey. लिखना पड़ेगा पेपर में अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसहोल्ड and facility survey 2012-13। For the year 2013-14, she has used this guy, rapid survey on children. RSOC. For the year 2013-14, right? And for 2014, you have the annual health survey. Annual health survey.
तो कुछ चीजें बताते हैं, मतलब ये मल्टीपल सोर्सेज हैं डेटा के। ये जो डेटा उन्होंने यूज करा, उस डेटा से उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स करी, उस डेटा से उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स करी। देखिए, कुछ इंप्रूवमेंट्स तो हुई हैं। उन्होंने एक तो मॉडरेट स्टंटिंग और सिवियर स्टंटिंग के बारे में बताया है। एक तो मॉडरेट स्टंटिंग है, एक सिवियर स्टंटिंग है। मॉडरेट स्टंटिंग कहा जाएगा number of stunted children who have height for age z score less than two deviations, right? Less than minus two deviations or whatever, right? That is moderate stunting. So I'll write the definition. It is good if you write it. Moderate stunting. Number of children whose height for age z score is below minus two standard deviations. Hmm. Below the median of reference population. बेटा जेड स्कोर कैसे निकालते हैं, याद है ना? स्टैट्स में करा था, राइट? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? So that is the way you find out the Z score. This is moderately stunting. Severe stunting. Severe stunting. अब मैं पूरा का पूरा लिख तो रहा नहीं हूँ. So I'm just going to copy this. Just wait. Number of children whose height for age Z score is below minus 3 standard deviation. That is severe stunting. This is moderate stunting. This is moderate stunting. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप रीजनल कंपैरिजंस को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि there is a substantial improvements in the level of moderate stunting in most of the states. So that has reduced over the time. So you have the data of 1992, 93, you have the data of 2005, 6, you have the data of 2012, you have the data for 2013 and for 2014 also. Although from the multiple sources you have that data, but you can corroborate this that the moderate stunting have reduced over, in most of the states. But if you look at the poorer states, the decline is there also. For example, poorer states like Bihar and Uttar Pradesh, they have also seen declines, but the decline is lower as compared to the richer states. So we'll write this point. The regional comparisons. Just that.
while there have been substantial improvements in the level of moderate stunting in most states. But in poorer states, decline has been lower. So states such as Bihar and Uttar Pradesh, for example, I mean, if you compare them with the states of Maharashtra and Haryana, right? So even among the better off states, so she's saying now, if you look at the better off states, the reduction which is happening now, that is getting level off. Now there is no more reduction which is happening. You understand the point? एक बार reduction उन्होंने देख ली, उसके बाद और ज्यादा reduction नहीं हो रही है. For example, the states such as Kerala and Tamil Nadu, उनके पास already बहुत ही lowest level of stunting थी, लेकिन उसमें भी अब फर्दर रिडक्शन नहीं हुई है जैसे जैसे टाइम पीरियड गया. जैसे यू स्टार्टेड कंपेयरिंग फ्रॉम 1993-94, राइट? फिर उन्होंने जब 2005-6 में देखा, उन्होंने 2012 में देखा, 2013 में देखा, तो उन्होंने यही पाया कि और ज्यादा रिडक्शन नहीं हो रही है इन बेटर ऑफ स्टेट्स, राइट? सो प्लीज राइट दिस इवन. Among the better off states, there appears to be a leveling off of reductions in the prevalence of stunting. ये पॉइंट्स चाहिए बेटा. अगर अंडर नरिशमेंट के ट्रेंड्स आते हैं तो आपको लिखने हैं ये पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल थे? यूपी एंड बिहार, राइट? We'll talk about the other trends in the severe stunting and the trends in some more things about the undernutrition in the next class, right? Thank you, beta.